Welcome, students, to the next topic of kings, farmers, and towns. Today, we will complete from page number 39 to 41 and will cover two topics only, which are differences in rural society and land grants and the rural elites. In the last class, we discussed about the strategies adopted by the people to increase the agricultural production. In such a way, they increase the production also. But the benefits were uneven, very uneven. Reason? The society. Society is totally divided into various sections, and these sections were not equal. So benefits are also not equal. Buddhist texts or Pali text describe or they refer about the different section or different people of the agrarian society. Differentiation among the people, those who engage in the agriculture section, like landless laborers, small peasants, large landowners, zamindars, etc. Right? And this small peasants and large landowners, they were considered as Gahapati. Gahapati means G-A-H-A, Gahapati, P-A-T-I. Gahapati, he was the master, owner, or the head of the household. He exercised control over the women, children, slaves, and the workers, those who share a common residence. He was the owner of the entire resource, like animal, land, whatever the household belongs. So question आएगा, write a brief note on Gahapati. That is given in the textbook also. Special box में दिया है that you should learn Gahapati. Right? So apart that this village headmen and the large landowners, they are having much power, more power. Or the position of the headman, that was hereditary, and they have full control over the cultivators. In the early Tamil Sangam book, that also describe about their own differentiation in the village people or agriculture people in Tamil Nadu. Like Vellalar Sangam book describe about the Vellalars. Vellalar means large landowners. Then Udavar means plowman. Then Adimai means slaves. So not this point, because one more question will come. What do you mean by this Vallela? Who were Vallelas? Vallelar means large landowners. Udava means plowmen. Adime means slaves. This also mentioned in the Sangam book. That means region to region, the names are also different. And the differentiation is based on the different access of land and all. Right? This much you have to learn from the differences in the rural society. And next is the land grant. In the early century CE, that means Common Era, finds of land grants. Many eminent personalities as well as kings and rural elites, they granted the land. Land grant किया है किसको? To Brahmins as well as the religious institutions. Right? Brahmanas को राजा भी दिया हुआ है, means land वगैरह. That is known as Agrahara. That is in your given in the textbook also side में दिया है Agrahara. पूछेंगे what do you mean by Agrahara? Agrahara means the land donated to the Brahmanas by the king. And these people Brahmanas were exempted from the taxes. Like land tax and other cesses they should not give. Even they got the right from the king to collect the taxes from the local people. Today also you can see, if you are going into the interior section of the Tamil Nadu as well as Kerala, कि अग्रहारास मिलेगा आपको, पूरा ब्राह्मण्स पूरे रहते हैं, एक रो में पूरा ब्राह्मण्स का हाउस होगा. That area is meant for the Brahmanas only. केरला से भी ज्यादा तमिलनाडु मिलेगा अग्रहारास, बहुत मिलेगा आपको. This agrahara is meant for the, क्या बोलेंगे, land granted to the Brahmanas by the king, and they were totally exempted from the taxes. They don't need to get the land tax and other taxes. Balki they have the right to collect the tax from the local people.
and these are written in the Sanskrit languages as well as local language means Sanskrit sorry Tamil and Telugu language में लिखे रखा है, लिखे तो रखना पड़ेगा, सपोज लैंड ग्रांट कर दिया है तो प्रूफ तो चाहिए. The proof was in the inscriptions, many inscriptions found, and copper plate also, ताम्रपत्र में लिख के दिया ये तुम्हारे लिए दे रहा हूँ, ये तुम्हारा राजा दे रहा है करके, इसलिए लैंड ग्रांट्स दे रखा है. ऐसे एक इंस्क्रिप्शन के बारे में डिटेल्स में बुक में दे रखा है प्रभावती गुप्ता के बारे में. प्रभावती गुप्ता, शी वाज द डॉटर ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट मींस बेस्ट फेमस रूलर इन द अर्ली हिस्ट्री, चंद्रगुप्ता सेकंड. Prabhavati Gupta, she married the king of Vakataka dynasty, that is ruled the Deccan region. Deccan region का मालवा, डेक्कन, मध्य प्रदेश, गुजरात उस एरिया का राजा था. वकातका डायनेस्टी. राजा का नाम है रुद्रसेना. शी वॉज वाइफ ऑफ रुद्रसेना सेकंड. वो बुक में नहीं दिया है, इतना आपको बुक में दिया है. प्रभावती गुप्ता वॉज द डॉटर ऑफ चंद्रगुप्ता सेकंड. मैं आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूँ. शी वॉज द वाइफ ऑफ रुद्रसेना सेकंड ऑफ वकातका डायनेस्टी. And she was the regent also. She became a queen and a regent because Rudrasena तो डेथ हो गया, उसके बाद she became the queen. That time queens very rare थे, isn't it? Very few non queen थे, उसमें से एक था ये प्रभावती गुप्ता. And that time she was the regent. Regent का मतलब क्या होता है? regent. अगर कोई हस्बैंड मर गया है, बच्चे अगर बालक है मीन्स छोटे हैं तो वो रूल नहीं कर पा रहे तो माँ रूल करेंगे, या माँ छोटी माँ कोई भी रूल करेंगे, लेडीज रूल करेंगे, उनको रीजन कहते हैं. लेडीज और जेंट्स कोई भी रूल कर सकते हैं. बच्चा छोटा है तो जब बच्चा बड़े हो जाएंगे तो वो राजा बन जाएंगे, हट जाना है. दैट इज रीजन है. सो प्रभावती गुप्ता वाज अ क्वीन एज वेल एज अ रीजेंट है, इसलिए उनका 3 बेटे थे, इसलिए 3 बेटे का नाम है इसका क्या बोलेंगे, नाम वगैरह आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, नाम वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ. दिवाकरा सेना, और मैं कहीं लिख के रखा है, दिवाकरा सेना एंड 1 मिनट, दामोदरा सेना, दिवाकरा सेना, दामोदरा सेना, परवरा सेना. No need to learn all the things. Just want to say, ये तीनों बच्चे छोटे थे. That is why she became the regent. And one more thing noted down that that time Sanskrit legal text described that women were not supposed to access the resources like land. Women were not supposed to access the land or any resources. But this is an exceptional case. This Prabhavati Gupta had accessed the land. Exceptional cases because she was the queen as well as the regent. She had the land also because with the help of her father only she ruled the country. 20 years she ruled. Prabhavati Gupta she ruled, and she granted the land. So normally kings they are granting the land, but this queen also granted the land. Why I am saying this specially because that time women are not allowed to access the land and all the things. But this Prabhavati Gupta, she's having the land and all, and she granted this land. Exceptional case. And also historians are saying that there might be this possible provisions of the Sanskrit text that is not at all applied in a uniform manner, और आपका uniformly implemented नहीं किया होगा. ये भी एक reason बोल रहे हैं. Anyway, inscription में लिखे रखा है इसके बारे में. That gives a vivid description about the relation between the state as well as the cultivators and farmers, etc. Right? And this inscription describe about the rural population also. Brahmanas, the peasants, as well as the people, those who produce many things for these Brahmanas and the peasants. And according to this legal text, these people, they had to pay the tax also. Different cesses also. Those who are residing in this village, right? And second, they have to obey the new lord and they pay the tax, dues and all the things to the lord, like that. And land grants के बारे में जो historian का views होता है वो पूछेंगे आपको. What were the views of the historian? Because it became a huge debate also. मतलब जो heated debate भी बन गया था कि जो land grant के ऊपर ये land क्यों grant किया, क्या बात है कर. Some historians they used to say that this is because the kings or the queen, whatever it is, they
adopted a strategy to extend the agricultural facility, means they wanted to produce more, that is agriculture practice को बढ़ाने के लिए they extend the land and all of things. So they donated the land for extending the agricultural field. एक व्यू है. अगला व्यू है, अगले जो बोले नो नो ऐसा कुछ नहीं है. सामंतास become powerful. Kings they weak हो गए politically and Samantha become powerful. That is why land को उसने ले लिया है या उसने दिया होगा. This is the second one. Third one, some people, some king this wanted to show the क्या बोलेंगे एक supermanism. We can say that they also the kings trying to project themselves as a superman. पावर तो डाउन हो रहा है कि कोई मेरे से सीनियर से अच्छा है, मैं दिखा करके देख करके दिखाए बहुत बड़ा सा इंसान है कर, राइट. वैसे I am going to weak because Samantas become powerful. I am going to weak and they will 100% they will snatch the land from me. That is that I will give the land to these people so that दुनिया क्या सोचेंगे, आयो दो किंग भाई साहब क्या बड़े थोप है ना, ये सोच करके ने क्या कर दिया, लैंड ग्रांट कर दिया. These were the different views of the historians, right. And anyway inscriptions जो है आपका जो लैंड ग्रांट्स that some इसके अलावा रिलेशन हमारे को रिलेशन देते हैं कल्टिवेटर्स एंड स्टेट का रिलेशन वगैरह जो बता देते हैं, जो आपका इंस्क्रिप्शन में लैंड ग्रांट की वजह से हमारे को मिल जाते हैं. बट मेनी पीपल आर देयर, दे आर बियॉन्ड द कर्टन. वो दे नेवर रीच द सॉरी दिस सामंतास और द किंग और रूलर्स. लैंड ग्रांट की बात उसको पता नहीं होगा. Such people were fisher folk, hunter gatherers, isn't it? And many people are there, fisher folk, hunter gatherers, and people those are moving from one place to another. Means हम बोलेंगे बंजारास, या आपको बोलेंगे सेमी सेडेंटरी पीपल, मोबाइल पीपल, मोबाइल करने वाले, मीन्स मोबाइल लेके घूमने वाले नहीं है, मतलब मूव करने वाले लोग, सेमी सेडेंटरी, राइट. इसके अलावा वो आर्टिजन्स होते हैं ना, वो सारे पास्टलिस्ट होता है, ये सब उसी का रिकॉर्ड्स वगैरह. दे नेवर केप्ट द रिकॉर्ड अबाउट द लाइफ ऑफ दिस पीपल एंड ऑल द थिंग्स. उनके बारे में पता ही नहीं, राइट. इतना आपको समझना है. 41 पेज तक ही पढ़ा है, अब 2 टॉपिक और हैं, वो उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएंगे. लेट्स सी दैट द थिंग्स एंटायर थिंग्स लिसन फ्रॉम मी. वन स्टूडेंट इज सीटेड हियर and I wanted to ask a question to her first. My dear, tell me the meaning of Grahapati. What do you know about Grahapati? Grahapati is the owner, master. Was the owner. Was the owner, master, or head of the household who exercise their control over the children, women, slaves, and workers. Right, and also he was the owner of the resources like land and animals, whatever it is related to the household, right? And who was a Vellalar? Vellalers were large landowners. Plowman को दूसरा नाम क्या है? Plowman. Urravar. And who was Adimai? Adimai were the slaves. अच्छा, this is mentioned in which book? Sangam text. Sangam, Tamil Sangam text, right? अच्छा, how was the मतलब how can you predict the position of the village headman? विलेज हेडमैन का पोजीशन कैसे है? कि वो लोग स्मॉलर पीसेंस को नो व्हाट विलेज हेडमैन का पोजीशन कैसे है, मतलब जो कोई इलेक्ट करता है कैसे है विलेज हेडमैन, जैसे सरपंच को ना, तो उनका पोजीशन कैसे होता है? उनको कंट्रोल, वो लोग कंट्रोल करते हैं. आर यू अनएबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? आई टोल्ड यू टू प्लीज लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग. ठीक है, विलेज हेडमैन मीन्स आज का सरपंच है, टुडे सरपंच वी आर इलेक्टिंग द पर्सन, एंड दैट टाइम विलेज हेडमैन मीन्स विलेज का जो प्रधान का जो पोजीशन है वो हेरिडिटरी है. वही बोलना वो हेरिडिटरी. तो लिसन द थिंग्स व्हेन आई एम टीचिंग. एंड लैंड ग्रांट्स टू द ब्राह्मणास एंड द religious institutions. And this was written in it was written in Pali नहीं, where means proof कहाँ पर है? संस्कृत टेक्स्ट. संस्कृत टेक्स्ट में है, लेकिन प्रूफ आपको इंस्क्रिप्शन शास्त्र से कॉपर प्लेट्स है, ठीक है, प्रूफ आपको मिलेगा. ठीक है, रिटर्न आपको संस्कृत में है और साथ में तमिल तेलुगु लैंग्वेज में लिखे. एंड हु वाज प्रभावती गुप्ता?
Prabhavatigupta was the daughter of the most important ruler Chandragupta II, and she was a wife of Rudrasena second. Rudrasena and a ruler of Vakataka's dynasty. वकादा dynasty. And what was the important मीन्स क्या बोलेंगे कि यूनिक नहीं बोल सकता. हम क्या इसमें से क्या हमें क्या पता चलता है कि जो उस टाइम का संस्कृत लीगल टेक्स्ट में से क्या डिफरेंस क्या दिखाई दे रहा था. संस्कृत लीगल टेक्स्ट में क्या लिखा था, इसमें क्या नहीं हुआ था, ऐसा कुछ है. There were some views that No. Sanskrit legal text describe that women are not supposed to. Women are not supposed to access the land. But Prabhavatigupta had the access Had land, access and she the granted land. also lands. Yes, sir. And what were the different views of the historians regarding the land grants? The different views of historians were, some historians they feel that it might land grant might be the part of the strategy which is adopted by the ruling class to extend the agriculture, and some feel that others feel that it might weaken the political power, as a king they lose their control over their samantas. So, and they feel that kings they consider themselves as a superhero, as they lose the control. Control, and they wanted to present at least the मतलब जो this facade means false power को दिखाना चाहता था. Right. Name the people those who are beyond the curtain or they are unable to reach the officials. The people beyond the curtains were pastoralists, mobiles, and artisans, fisher folk, hunter gatherers. ठीक है enough. Thank you. अब आपको बोर्ड explanation भी देंगे. Thank you. Dear students, so we discussed about the differences in rural society and land grants on the new rural elites. We have seen that different text, even like Tamil text as well as the Buddhist text, they discuss about the differences in the difference in the agricultural section, isn't it? We discussed about the Gahapati. Who was the Gahapati? He was owner. He was owner, master, or head of the household, who exercised control over the women, children, slaves, and workers, and also who shared. They also own the resources like land, animals, and other things, which belongs to the household. And गृहपति मीन्स जो आपको बुद्धिस्ट टेक्स्ट में बताता है स्मॉल पेसेंट्स और लार्ज लैंड ओनर्स को गृहपति कहते हैं. राइट, ये भी हमने बताया था. वाली टेक्स्ट में आपको मेंशन किया इसके बारे में, बिकॉज डिफरेंटिएशन नहीं है कि बिकॉज ऑफ द एक्सेस ऑफ लैंड एंड ऑल थिंग्स. सम वेयर द लैंड स्मॉल लैंड ओनर्स भी है, लैंड ओनर्स है, एंड सम आर लैंडलेस लेबरर्स आल्सो देयर. सो बेनिफिट्स वर अनइवन. राइट, उसके बाद फिर हमने बोला कि विलेज हेडमैन के बारे में बता दिया. दैट पावर पोजीशन वाज हेरिडिटरी ओनली, एंड दे हैव कंट्रोल ओवर द कल्टिवेटर्स ऑफ द एंटायर विलेज. And Tamil Sangam text also describe about the Vellalar, Udavar, and Adime. Vellalar means the large landowners, Udavar means the plowmen, and Adime means the slaves. And these differentiation का मतलब है आपका various access of land and different access of land and all the things. राइट, देन आपको लैंड ग्रांट्स के बारे में बता दिया. लार्ज लैंड ग्रांट्स है, मतलब साइज अलग अलग है, छोटे से लेके छोटा एक स्मॉल पीस ऑफ लैंड से लेकर के बिग पीस ऑफ लैंड तक आपको आप देख सकते हैं लार्ज लैंड ग्रांट्स में. इसमें आपको इंस्क्रिप्शंस लिखे रखा है, साथ में आपका क्या बोलेंगे ताम्रपत्र मीन्स कॉपर प्लेट्स में भी लिखे रखा है. नॉर्मली दे यूज्ड टू गिव दैट डोनेटेड टू द ब्राह्मणास एज वेल एज रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस. ब्राह्मणास को दिया उसको बोलेंगे अग्रहारा बोलेंगे. अग्रहारा द लैंड डोनेटेड टू द Brahmanas by the king, and they are totally exempted from the different taxes, land tax as well as other taxes also, and also they have right to collect the tax from the local people. Right, and the religious institution में जो दिया गया है ताम्रपत्र वगैरह अब भी survived है. Right, agraharas we can see in South India, now also South India में agraharas है. राइट, इसके बारे में फिर इसके बाद हमने बोला था कि जो प्रभावती गुप्ता के बारे में बता दिया. शी वाज द डॉटर ऑफ चंद्रगुप्ता सेकंड एंड वाइफ ऑफ रुद्रसेना सेकंड. राइट, ही वाज द किंग ऑफ वकातका डायनेस्टी, डेक्कन एरिया में, डेक्कन एरिया का है. एंड
एंड दैट टाइम संस्कृत टेक्स्ट कहता है लैंड वाज नॉट अनेबल टू एक्सेस बाय द women, isn't it? But Prabhavati had the land and she granted also because Rudrasena she was the queen also and regent also. Regent means मैंने आपको कहानी बता दिया, उनका बच्चे के बारे में बता दिया, उसका डेथ हो गया, फिर उसका बच्चा छोटा था तो she became the queen and powerful ruler थी वो, right? And she granted the land also. And this inscription से हमारे को ये बताता है विलेज का रिलेशन बिटवीन द पेसेंट्स एज वेल एज द स्टेट एक्सेट्रा, और विलेज पॉपुलेशन के बारे में बताता है, ब्राह्मण के बारे में एज वेल एज पेसेंट के बारे में, साथ में उसको सपोर्ट करने वाले, प्रोड्यूस करके बहुत सारे सामान बनाने वाले लोगों का, इनके बारे में सब बताते हैं. एंड दे हैव टू पे द टैक्स टू द न्यू लॉर्ड, दे हैव टू एक्सेप्ट ओबे द न्यू लॉर्ड आल्सो, पे द टैक्स आल्सो, इसके बारे में बता दिया. फिर बोल दिया लैंड ग्रांट के बारे में, डिबेट के बारे में बता दिया अमंग द हिस्टोरियंस, राइट? हीटेड डिबेट था लैंड ग्रांट के ऊपर, लैंड ग्रांट के ऊपर, राइट? एंड वो डिबेट क्या क्या था, कुछ जो हिस्टोरियंस ये कहते थे कि जो लैंड इसलिए जो आपको ग्रांट कर दिया बिकॉज दे वांटेड टू एक्सटेंड दे अडॉप्ट अ स्ट्रैटेजी टू एक्सटेंड एग्रीकल्चर, दैट इज वाई. एंड सेकंड है, कुछ लोग बोला कि नहीं नहीं सामंतास बिकम पावरफुल एंड किंग बिकम पॉलिटिकली इनएक्टिव बन गया. दैट टाइम they extended they granted the land to the samantas and all. एंड कुछ लोग बोला नो नो ऐसा कुछ नहीं है कि जो राजा अपना क्या बोलेंगे सुपरमैन दिखाना चाहता है, बिकॉज लैंड जैसे कि वो अपने पावर जो लूज होने वाले हैं, सो दैट बेटर इज दैट है दूसरों के सामने पावर लूज होकर के डाउन नहीं होना, मैं अपने लैंड को ही मतलब जो ग्रैंड दे देंगे, तो लोग सोचेंगे देखो कितना अच्छा किंग है, लैंड को अपने दान में दे दिया. इस तरह भी लोग सोचते हैं. वट एवर इट इज व्यूज आपको पढ़ लेना. इसके अलावा फिर बोल रहे हैं कि जो इंस्क्रिप्शंस वगैरह हमारे को कल्टिवेटर्स और स्टेट का रिलेशन बता देते हैं, लेकिन इसके सामने जो आपका लैंड ग्रांट का सामने या ऑफिस समंदर के पास में सामने किसी के पास पहुंचने ना पहुंचने वाले कुछ लोग होते हैं विलेज में, उनका दे द पीपल बियॉन्ड द रीच ऑफ द ऑफिसर्स, लाइक फिशर फोक होता है, हंटर गैदरर्स होता है, पास्टलिस्ट होते हैं, आर्टिजन्स होता है, सेमी सेडेंटरी पीपल होता है, जैसे कि पास्टलिस्ट मीन्स मूव करने वाले, मोबाइल पीपल, बंजारा से पीपल, इसके बारे में इतना ही हमने बता दिया, राइट? थैंक यू. नेक्स्ट 2 सेशन से हमारा क्लास चैप्टर खत्म हो जाएगा. थैंक यू.